Let us have understanding how to calculate the answer. Mr. Amitabh Bacchan believes that in above situation an opportunity of arbitrage exists. So he enters into the transaction of borrow rupees and invest in dollar. Calculate the profit or loss that he is likely to make. That is what the question is. Everybody is requested to pay attention. As का डेट है 1st ऑफ जनवरी, एक साल के बाद 31st ऑफ डिसम्बर. लेट मी एक्सप्लेन यू. आपको कुछ लिखने का जरूरत नहीं है. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेट से Mr. AB will enter into the transaction for borrow rupees and invest in dollar. यानी आज क्या किया जाएगा? आज हम लोग कुछ ऐसा करेंगे that we will let us say borrow, ऐसे randomly मैं बोल रहा हूँ, an amount of rupees 70. 70 ही क्यों? उसका कोई रीजन नहीं है. At the rate of 15% for 1 year. हम लोग क्या करेंगे? 70 रुपीज बोरो करेंगे एट 15% फॉर 1 ईयर. उसके बाद स्पॉट ट्रांजैक्शन. स्पॉट ट्रांजैक्शन होगा सेल ऑफ रुपीज एंड परचेस ऑफ डॉलर. यानी हम लोग क्या करेंगे? रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद वी विल हैव इन्वेस्ट $1, है ना, क्योंकि 70 रुपीज का हमको क्या मिलेगा? $1 मिलेगा. इन्वेस्ट $1 एट द रेट ऑफ 6% फॉर 1 ईयर. यानी आज हमको क्या करना है? हमको बोरो करना है रुपीस. उसके बाद स्पॉट ट्रांजैक्शन में रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना है और $1 में इन्वेस्ट करना है एट द रेट ऑफ 6% फॉर 1 ईयर. उसके अलावा हम लोग और एक ट्रांजैक्शन में एंटर होंगे. कौन सा वो ट्रांजैक्शन है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं. ना ये जो सारे ट्रांजैक्शंस पे हमने एंटर किया है उसकी वजह से ईयर एंड में क्या होगा वो समझते हैं. जो हमने बोरो किया है ना उसका हमको क्या करना पड़ेगा? रीपेमेंट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट वी विल हैव repayment of loan. It is principal plus interest. 70 plus 70 into 15%, time period is 1 year. So we understand that it is 70 into 0.15. तो 10.5 रुपए का इंटरेस्ट प्लस 70, यानी रीपेमेंट ऑफ लोन होगा ₹80.5. तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमने बोरो किया उसका रीपेमेंट होगा. सेकेंड वी विल हैव मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट. उसमें 1 plus 1 into 0.06 into like 1 year, that is 6 year, so 12 divided by 12, so it is $1.06. यानी जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका मैच्योरिटी इतना होगा. तो बोरो किया उसका रीपेमेंट, जो इन्वेस्टमेंट किया उसका मैच्योरिटी. नाउ जो हमने 1st ऑफ जनवरी को ट्रांजैक्शन किया है 1st ऑफ जनवरी को, उसके बेसिस से हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल बी हैविंग द रीपेमेंट ऑफ द लोन and at the same time maturity amount of the deposit. तो हम लोग आज ही क्या करेंगे फ्रेंड्स? 1st ऑफ जनवरी को लिसन केयरफुली. टुडे वी विल एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ द डॉलर इनटू रुपीस. क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं डॉलर करेंसी में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पास मैच्योरिटी डॉलर करेंसी का आएगा.
इसलिए मैं क्या करूंगा, आज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा फॉर कन्वर्जन ऑफ द डॉलर इनटू रुपीस. दैट इज व्हाट आई विल डू. नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट विल हैपन, मेरे पास 1.06 डॉलर होंगे. और आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है 78 रुपीज पर डॉलर. सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. उसमें मैं लिख रहा हूं रुपीस एंड डॉलर. आपको $1 का कितना रुपीस मिलेगा फॉरवर्ड एक्सचेंज में, 78. आपके पास मेच्योरिटी कितना है, 1.06 डॉलर है. सो कन्वर्शन ऑफ दैट इनटू रुपीस यू विल गेट दिस अमाउंट ऑफ रुपीस. सो 78 into 1.06 divided by 1. So 78 into 1.06. तो आपको क्या मिलेगा ऑन कन्वर्जन ऑफ द डॉलर इनटू रुपीस, आपको 82.68 रुपीस मिलेंगे. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द ईयर. अच्छा, सो नाउ वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज लाइक अ काइंड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. उसमें अमाउंट रिसीव्ड 82.68 रुपीस एंड रीपेमेंट ऑफ लोन that is an amount of rupees 80.5. और उसके बेसिस से विल बी एबल टू कैलकुलेट द आंसर. सो इट इज 82.68 minus 80.5. दैट कम्स टू 2 रुपये 18 पैसे. सो ऐसा करके हमको प्रॉफिट या लॉस का वैल्यू मिलेगा. This is the way we are required to make the calculation of answer. Everybody is requested to stop writing. Let me explain you. Now, before we write answer for the question, मेरा एक क्वेश्चन है सब स्टूडेंट से. I want you to use the chat box to give answer. 1st of January को हमने ये सारे ट्रांजैक्शंस में एंटर किया. 1st of January को. Now, my question to all of you is this. Suppose on 31st of December, comma, spot exchange rate is 73 rupees per dollar. I want you to tell me in the chat box that what would be profit or loss to Mr. Amitabh Bacchan. I want you to answer this question in the chat box कि 1st of January को ये सारे ट्रांजैक्शंस में एंटर किया हमने और 31st of December को स्पॉट एक्सचेंज रेट है 73 रुपीज पर डॉलर. तो मिस्टर ए बी को 31st of December को कितना प्रॉफिट या लॉस होगा. Let us have understanding how to give answer for the question which I have raised. Answer for the question is that ये जो information है ना, ये information मैंने आपको मिसगाइड करने को दे रखा है. क्यों ऐसा सर? क्योंकि देखो 1st of January को जो सारे ट्रांजैक्शंस में हमने एंटर किया है उसमें एक क्या है, एक है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ द डॉलर इनटू रुपीस. सो वी अंडरस्टैंड एट से ये जो 31st of December को स्पॉट एक्सचेंज रेट का इंफॉर्मेशन दे रखा है ना, वो इंफॉर्मेशन यूजलेस हो जाता है. क्यों? क्योंकि उस दिन का स्पॉट एक्सचेंज रेट कुछ भी है, उस दिन का स्पॉट एक्सचेंज रेट कुछ भी है. वी अंडरस्टैंड एट से हमको क्या मिलेगा, हमको 78 रुपीज ही मिलेगा पर डॉलर. सो वी अंडरस्टैंड एट से वेदर द एक्सचेंज रेट इज मोर और लेस, you'll get 78 रुपीज पर डॉलर. सो 1.06 डॉलर का आपको इतना रुपया फिक्स्ड मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा. सो दैट इज द रीजन से दिस इज गिवन अ नेम एज आर्बिट्रेज.
आर्बिट्रेज क्यों कहा जाता है? आर्बिट्रेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिस्क फ्री प्रॉफिट है, यानी फर्स्ट 31 दिसंबर को कोई भी स्पॉट एक्सचेंज रेट है, कोई भी स्पॉट एक्सचेंज रेट है, आपको फिक्स्ड अमाउंट ही मिलेगा, दैट इज 78 रुपीज पर डॉलर, एंड यू विल बी एबल टू मेक अ शॉर्ट गेन ऑफ 2 रुपी 18 पैसे. वन मोर क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. स्पॉट एक्सचेंज रेट is 70 रुपीज पर डॉलर. रेट ऑफ इंटरेस्ट है रुपी करेंसी का 15%, डॉलर करेंसी का 6%. क्या एक साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट 78 रुपीज पर डॉलर हो सकता है? गिव आंसर इन द चैट बॉक्स. फ्रेंड्स, अगर ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, तो एक साल का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट 78 रुपीज पर डॉलर नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये सिचुएशन में आर्बिट्रेज पॉसिबल है, and anybody can enter into this combination of the transaction, and irrespective of the spot exchange rate on 31st of December can make a gain. That is the reason say this situation is not possible. क्या होना चाहिए वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पर ये नहीं हो सकता है उतना मेरे को पता चल गया है. चलो अभी इसका हम लोग आंसर लिखते हैं, ठीक है ना. चलो राइट एन आंसर. आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर ए बी, उस पर लिखो बोरो रुपीज, इन्वेस्ट इन डॉलर. उस पर लिखो ऑन 1st of January Mr. E.B. will enter in following transactions. In that, write down 1. Borrow rupees 70 at 15% for 1 year. ब्रैकेट में लिखो we may assume any other amount also. Second, enter in spot transaction sell rupees purchase dollar. उससे में लिखो on conversion of 70 rupees into dollar, Mr. AB will get $1. Third, invest $1 at the rate of 6% for 1 year. Fourth, most importantly, Mr. AB will enter in one-year forward contract for sell of dollar and purchase of rupees.
उसमें लिखो विद पैराग्राफ, this contract is entered upon to convert maturity amount of dollar into rupees. Full stop. Heading right down. On 31st of December, Mr. EB will have following position, उसमें लिखो A, maturity amount of deposit, principal plus interest, that is the maturity amount of deposit. B, liability to repay loan, principal plus interest, 70 plus 70 into 15% into 6 divided by 12. C, conversion of rupees into dollar for, I'm sorry, conversion of dollar into rupees for repayment of loan. Full stop. सॉरी मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ लैंग्वेज. Holding a forward contract for conversion of the dollar into rupees for repayment of loan. Heading right down, calculation of profit or loss. उसमें लिखो रुपीस एंड डॉलर. एक डॉलर का 78 रुपीस है, तो 1.06 डॉलर का कितना रुपीस, वो हमको कैलकुलेट करना है. So 78 into 1.06, 82.68. उस पर हम लोग करेंगे अमाउंट रिसीव्ड 82.68 less repayment of loan
80.5, उसका जो डिफरेंस है ना, दैट इज आर्बिट्रेज। 2 रुपये 18 पैसे। ऐसा करके हमको आर्बिट्रेज का कैलकुलेशन करना है विद पैराग्राफ राइट डाउन। Irrespective of spot exchange rate on 31st of December, comma, Mr. AB will be able to make above gain. So, with paragraph write down, learning point of the question is that if spot exchange rate is 70 rupees per dollar, comma, rate of interest for rupees is 15%, dollar is 6%, 1 year forward exchange rate cannot be 78 rupees per dollar, else arbitrage exists. Full stop. फ्रेंड्स, अभी यही ट्रांजैक्शन में क्यों आर्बिट्रेज है, क्या एक्सचेंज रेट होना चाहिए, वो सब हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, मिसेस अमिताभ बच्चन believes that in above situation an opportunity of arbitrage exists, so she enters into the transaction of borrow dollar and invest in rupees. Calculate profit or loss that she is likely to make in this case. That is the question. I request all of you to write down answer along with me. Second question, Mrs. AB transaction, borrow dollar and invest in rupees. उसमें transactions on 1st of January, उसमें पहला लिखो borrow $1 at the rate of 6% for 1 year. In bracket write down, we may assume any other amount also. Second, spot transaction, sell dollar, purchase rupees. उसमें लिखो on conversion of $1
Mrs. AB will get rupees 70. Third, invest rupees 70 at the rate of 15% for 1 year. इसको इन्वेस्ट करो एक साल के लिए. Fourth, most importantly, enter in forward contract, sell off rupees and purchase of dollar. यानी आज क्या किया फ्रेंड्स, हमने $1 बोरो किया, उसको स्पॉट में कन्वर्ट किया रुपीस में, और हमको क्या मिला, 70 रुपीज मिल गया. उसको इन्वेस्ट किया 15% फॉर 1 ईयर, और फिर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर कन्वर्शन ऑफ द रुपीज इनटू डॉलर. On 31st of December, Mrs. AB will have following position. उसमें लिखो 1, liability to make repayment of loan. $1.06. कैसे करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 1 + 1 इंटू 0.06 into 12 divided by 12. Second, maturity amount of deposit in that write down, principal plus interest. प्रिंसिपल क्या होगा फ्रेंड्स, प्रिंसिपल होगा 70 + 70 इंटू 15% इंटू 12 डिवाइड बाई 12. $70 + 10.5, that comes to rupees 80.5. This is the maturity amount of deposit in rupees term. Third, holding F contract to convert rupees into dollar at forward exchange rate. तो रुपीस एंड डॉलर, 78 रुपीज का $1 मिलेगा, है ना, 78 रुपीज का $1 मिलेगा फॉरवर्ड एक्सचेंज में, आपके पास 80.5 है, so you'll get this amount of dollar. So it is 80.5 into 1 divided by 78. So it is 1.0321. So आपको इतना $1 मिलेगा. अच्छा, now calculation of
प्रॉफिट और लॉस, उस पर लिखेंगे हम लोग अमाउंट रिसीव्ड लेस रीपेमेंट। अमाउंट रिसीव्ड कितना है 1.0312321, दिस इज व्हाट वी हैव रिसीव्ड। रीपेमेंट कितना है 1.06, so that results into loss 1.0321 minus 1.06, 0.0279, इतने का लॉस होगा। प्लीज राइट डाउन आंसर। तो फ्रेंड्स देखो, एक सिचुएशन में अगर आर्बिट्रेज का पॉसिबिलिटी है, उसी में अगर आपने गलत कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस में एंटर किया तो आपको लॉस होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। ये ट्रांजैक्शंस में रिपीट कर रहा हूं। 1 जनवरी को क्या किया, $1 बोरो किया, उसको रुपीज करेंसी में कन्वर्ट किया, रुपीज में इन्वेस्ट किया। फॉरवर्ड तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि उस दिन के रेट के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं रख सकते हैं। ईयर एंड में क्या होगा, से जो भी आपका मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट रुपीस में है उसको डॉलर करेंसी पे कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद से वी विल मेक द रीपेमेंट। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि एक सिचुएशन में अगर गेन का पॉसिबिलिटी है तो लॉस का पॉसिबिलिटी भी है, लॉस का पॉसिबिलिटी भी है, दैट इज फर्स्ट थिंग। और दूसरा, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। दूसरा, वी अंडरस्टैंड दैट से अगर गेन का पॉसिबिलिटी है तो आपको कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस में एंटर करना वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। So we end this question with certain points that we have kept pending. एक फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट 78 नहीं तो क्या होना चाहिए, that we are going to understand in the coming questions. सेकेंड, अगर गेन है तो सिर्फ यही ट्रांजैक्शन में क्यों गेन है वो भी हमको समझने का बाकी है। These things are going to be considered by us, that we are going to understand say in the coming part of the questions.